So complex numbers are a complex variety of the real numbers. In real numbers, you only have one number like 10 or 20, but in complex numbers, you have two different set of numbers. One is the real part of the number, and the other is the complex part. Okay, so complex numbers are denoted by Z, and they have two parts, A plus iota times B. A is called the real part, B is called the imaginary part, and I is also known as iota, which is also equal to the square root of -1. ये सब तो आपको पता ही होगा. Okay, then there are few terms. One is the complex conjugate, which is denoted by C star. So complex conjugate में बस imaginary part को negative कर देते हैं. Real part does not change. So this is the complex conjugate. Okay. Then if we have to add two complex numbers, we add their real part and imaginary part separately. So अगर Z1 A plus IB है, Z2 is A2 plus IB2, then Z1 plus Z2 will just be A1 plus A2 plus I times B1 plus B2. So addition is very straightforward. And similarly, अगर subtraction करना हो two complex numbers का, so we will do A1 minus A2 and B1 minus B2. Okay, now let us see how to multiply two complex numbers. So what will be the multiplication of these two complex numbers? तो Z1 Z2 करना है, इसका मतलब A1 plus I B1 multiplied by A2 plus I B2. Okay, so इसको हम expand करेंगे तो क्या आएगा? A1 with A2, then I B1 with A2 plus I B1 with I B2 and A1 with I B2. Okay, चार टर्म्स आएंगे, ठीक है. तो अब रियल वाले सेपरेट कर लो. रियल वाला होगा A1 A2 minus B1 B2 because iota square is -1, and complex term separate कर लो, which will be A1 B2 plus A2 B1. So अगर Z1 multiplied by Z2 करना है, रियल पार्ट सिर्फ A1 A2 नहीं होगा, माइनस B1 B2 भी आएगा. ओके, अगर Z1 स्टार Z2 स्टार करना हो तो क्या आएगा आंसर? सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे माइनस आएगा, रियल पार्ट सेम रहेगा. सो इसका आंसर होगा A1 A2 माइनस B1 B2. रियल पार्ट चेंज नहीं होगा, बट इमेजिनरी पार्ट में नेगेटिव आ जाएगा. सो कैन वी से दैट this is also equal to the complex conjugate of Z1 dot Z2. So हमारा ये प्रॉपर्टी भी हो गया इसके साथ, दैट अगर हम दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, that is equal to the complex conjugates of the individual multiplications. So without even solving, you could have said कि बस एक ही नेगेटिव साइन चेंज होगा इस प्रॉपर्टी से. This is a property of all complex numbers. Then the next definition is modulus of a complex numbers or mod of Z. Okay,
इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, then mod of z is the magnitude or the absolute value of the complex number. So this will be equal to square root of a square plus b square. Now there is a property that mod of z1 times z2 is equal to mod of z1 times mod of z2. इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सो अलग अलग का मॉड होगा स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई करके मॉड लेंगे तो हमने जो ये निकाला था इनका सम ऑफ स्क्वायर्स करके ऐड कर लोगे एंड बोथ ऑफ देम विल गिव यू द सेम आंसर। ओके, सो इस प्रॉपर्टी को बस याद रख लो, प्रूफ बाद में कर लेना। ओके ओके, एंड व्हेन विल टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स बी इक्वल? जब उनका दोनों रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेम हो। एक सेकेंड, ये हट नहीं रहा, हाँ ठीक है। सो z1 will be equal to z2 only if a1 is equal to a2 and b1 is equal to b2। अगर सिर्फ रियल पार्ट इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इक्वल नहीं है देन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स विल नॉट बी इक्वल। ओके, देन व्हाट विल दिस बी इक्वल टू? दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस द रियल पार्ट ऑफ z। ये तो सिंपल सा है, a प्लस आई बी और a माइनस आई बी को ऐड करो तो 2a बचेगा and z minus z prime, this will be equal to twice the imaginary part of c multiplied by I। ये दोनों प्रॉपर्टीज भी आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। कैन यू प्रूव दैट z टाइम्स z स्टार इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? ओके ठीक है, तो a प्लस आई बी और a माइनस आई बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इमेजिनरी पार्ट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ रियल पार्ट बचेगा। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, तो दोनों का मतलब सेम ही है। z बार और z स्टार बोथ मीन द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो अगर z बार आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, सेम ही मीनिंग है। ओके ओके, तो अब हम करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑन अ आर्गेंड प्लेन। Argand plane is nothing but the Cartesian plane x and the y axis। बट इसमें एक डिफरेंस होता है, x एक्सिस की जगह we write the real part of the complex number z and y axis की जगह we write the imaginary part of the complex number z। तो अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो इसका रिप्रेजेंट होगा बाय द पॉइंट 3,4, because 3 is the real part which is along the x-axis and 4 is the imaginary part which is along the y-axis। So like that you can represent any complex number on the Argand plane। ठीक है, ओके, अगर z वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ है, where will be the complex conjugate of c? तो complex conjugate of a complex number in an Argand plane is a reflection about the x-axis। तो अगर z हमारा ऊपर था, z प्राइम हो जाएगा 3,-4 नीचे। ओके,
And how will you find the absolute value of a complex number in the plane? You will just take the distance of the complex number from the origin. This will give you the absolute value or the modulus of the complex number. इस केस में the absolute value is 5. And the absolute value of the complex conjugate is also the same as the absolute value of a complex number. So ये भी हमारी प्रॉपर्टी इसी से प्रूव हो गई. ओके, इतना समझ आ गया? ओके, now we can represent the complex number as a plus ib. We can also represent the complex number in terms of r and theta. So a complex number can also be represented by r times e to the power I theta. Okay. So if we draw the complex number on this Argand plane, a will be its x coordinate, b will be its y coordinate. Okay. Now the same complex number z can also be represented with the radial distance from the origin, which is r, and the angle from the x-axis, which is theta. Okay. So there are two ways of representing a complex number. One is using a and b, while the other is using r and theta. So if you know one of them, you can convert it into the other form. Okay. For example, if you know the complex number is z is equal to 1 plus I, then you can also say that this is equal to root 2 times e to the power I pi by 4. Because if a is 1, b is 1, then the magnitude will be square root of 2. So r will be root 2 and theta will be 45 because tan theta is 1, therefore theta is 45. So if we have z is equal to a plus ib and it is also equal to r e to the power I theta, then we can say r is equal to square root of a square plus b square and theta is equal to tan inverse of b over a. ये समझ आया कहाँ से आया? सो z इज इक्वल टू a प्लस आई बी हम तब यूज करते हैं जब हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना हो, और z इज इक्वल टू r e टू द पावर आई थीटा हम तब यूज करते हैं जब हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये वाला फॉर्मेट आसान रहता है. Suppose we have two complex numbers, z1 is r1 e to the power I theta 1 and z2 is r2 e to the power I theta 2. Then for multiplication, we simply multiply r1 with r2 and exponents की power multiplication में add हो जाती है. So this becomes I times theta 1 plus theta 2. So when we multiply two complex numbers, their radial part is multiplied, whereas their argument or the angle is added. Okay. इस फॉर्मेट में r e to the power I theta वाले फॉर्मेट में this r is called the modulus and this theta is known as the argument. और इसको हम कई बार शॉर्ट में ARG भी लिखते हैं. So argument of a complex number is the angle that the representation of the complex number is making with the x-axis. Okay. And similarly, अगर आपको complex number divide करने हो तो z1 by z2, what will this be equal to? में मॉड्यूलस हमारा r1 by r2 हो जाएगा और आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगी. Okay. So इस फॉर्मेट में लिखने का ये फायदा होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बहुत आसान हो जाता है. ओके. Okay, so let's say we have a complex number
r e to the power I theta. What will happen if I add 2 n pi to the theta value? Okay, so changing your argument by multiples of 2 pi does not change the complex number. So इसलिए जनरली हम 0 से 2 pi तक आर्ग्यूमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं. So we say that argument should always be between 0 and 2 pi because फिर वो बार बार साइकिल में रिपीट होती जाएंगी और फिर कंफ्यूजन होगा. So if we have two complex numbers, z1 is equal to 5 e to the power I 5 pi by 4 and z2 is equal to 5 e to the power I 13 pi by 4. These two complex numbers are identical because the only difference is in their arguments by a factor of 2 pi. Okay. 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 So let's do some properties of complex numbers. So first property is cos of x is equal to z plus z bar divided by 2. Can you prove this? Where z is equal to e to the power I theta. So you are given that the complex number z is e to the power ix. You have to prove the above identity. r इसका 1 है क्योंकि z हमारा सिर्फ e to the power ix है. इसका ऑटोमेटिकली मतलब r हमारा 1 है. ओके, सो हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं. राइट हैंड साइड है z which is e to the power ix and conjugate हो जाएगा e to the power minus ix, right, divided by 2. Then you must have studied a property that e to the power ix is nothing but cos x plus I sin x. ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ा है पहले? Okay, so if you substitute this into the equation, it becomes cos x plus I sin x, and e to the power minus ix is cos x minus I sin x by 2. Okay, so this is equal to cos x, which is equal to the LHS. तो इसका मतलब अगर हमारा z एक सिंगल मॉड्यूलस का है, तो अगर हमें कोसाइन ऑफ x निकालना होगा तो हम z और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. So can you also prove that sine of x is equal to z minus z bar by 2i?
ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? z को वी विल राइट एज cos x प्लस आई साइन x, जैसे पहले किया था, एंड c प्राइम को वी विल राइट एज cos x माइनस आई साइन x, एंड डिवाइडेड बाय 2i करेंगे तो सिर्फ साइन ऑफ x बचेगा, विच इज द राइट हैंड साइड। ओके, सो ये दोनों आइडेंटिटीज आप याद रख सकते हो, दैट cos ऑफ x इज e टू द पावर आई एक्स प्लस e टू द पावर माइनस आई एक्स बाई 2, and sine of x is e to the power ix minus e to the power minus ix upon 2i। इन दोनों का एक स्पेशल नाम भी है, these two are known as the Euler's identities। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। तो let us see how complex numbers multiply and divide on an Argand plane। So on an Argand plane, the x-axis is the real part of Z and y-axis is the imaginary part of Z। So let's say we have one complex number C1 is equal to R1 e to the power I theta 1। So that means this distance is R1 and this angle is theta 1। Now let's take another complex number Z2, which is equal to R2 times e to the power I theta 2। So इसका मतलब this distance is R2 and this angle is theta 2। So what will be the division, what will be the multiplication of z1 and z2 represented on this plane? So z1 times z2 will be equal to r1 r2 times e to the power I theta 1 plus theta 2। इसका मतलब जो आर्ग्यूमेंट है वो तो ऐड हो जाएगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका एंगल कहीं इस तरफ होगा, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ z1 z2 इस लाइन के अलोंग होगा and length will be equal to r1 times r2। So this will be z1 times z2। तो जो एंगल्स है वो ऐड कर देंगे मल्टीप्लिकेशन में और जो मॉड्यूलस है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, such that this length is equal to r1 times r2 and this angle is equal to theta 1 plus theta 2। Now let us see how z2 divided by z1 will look like। So z2 by z1 में modulus will become r2 divided by r1 and argument will become theta 2 divide minus theta 1। तो जब डिवीजन वाला हम इसे प्लॉट कर रहे होंगे तो पहले तो एंगल इनका डिफरेंस होगा, तो कहीं ना कहीं इधर आएगा, where this will be the difference of angles and इसकी length will be equal to r2 by r1। So this will be the complex number represented by z2 over z1। तो डिवीजन में आर्ग्यूमेंट्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। Okay, so let's say this is point A। Can we say point B will be z1 by z2? तो z1 अगर z1 by z2 कर रहे हैं तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 की जगह थीटा 1 माइनस थीटा 2 करेंगे, तो वो नीचे वाली साइड आ जाएगा एंड इसका मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू r1 by r2। Okay, so whatever numbers you are given, just multiply and divide, you will get the answer। Okay, now let us plot the complex number iota। So iota is the square root of -1। Where will it lie on the complex plane?
आयोटा किधर आएगा इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में? So can we write iota as 0 plus 1i? Okay, so this will be the representation of iota. And real numbers किधर आएंगे? Real numbers. On a complex plane, the real numbers will lie along the x-axis, while the imaginary numbers will lie along the y-axis. Okay. So अगर हम आयोटा को देखें तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इसका आर्ग्यूमेंट 90 है, राइट? आर्ग्यूमेंट इज π/2. तो अगर हम आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट कितना हो जाएगा? सो इसको हम लिखेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1 टाइम्स e टू द पावर i पाई, और इसको ड्रॉ किधर करेंगे? So I square will lie somewhere over here. तो जैसे जैसे हम I से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, मैग्नीट्यूड तो 1 ही रहेगा, आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाएगा. सो I क्यूब इधर आ जाएगा, I टू द पावर 4 इधर आ जाएगा, I टू द पावर 5 वापस I पे आ जाएगा. ऐसे ही 6, 7, 8 इन्हीं 4 पॉइंट्स पे रिपीट होता जाएगा. कैन वी से I स्क्वायर इज इक्वल टू -1? ठीक है, वो तो हमें पहले पता ही था, बिकॉज I इज द स्क्वायर रूट ऑफ -1. What will be the value of I to the power 4? What will be the value of I cube? Negative iota. What will be the value of I to the power 724, 723? तो 720 तक तो वापस 1 बच जाएगा, सिर्फ iota क्यूब बचेगा, which is minus iota. What is iota to the power 622? So like that you can proceed. So बस ये इसी सर्कल पर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा. So let us calculate the cube root of -1. अभी तो हमने square root of -1 किया था, which was known as iota. But now let us calculate the cube root of -1. तो -1 will be represented at this position on the complex plane. तो -1 can be written as 1 e to the power I pi. तो जब हम इसका क्यूब रूट लेंगे, क्यूब रूट ऑफ -1 will become 1 e to the power I pi by 3. So क्यूब रूट ऑफ -1 किधर लाई करेगा आर्गेंट प्लेन पे? Okay, somewhere over here. It will have a magnitude of 1 but an argument of pi/3. Okay. So if this angle is 2 pi/3 and this magnitude is 1, what will this complex number represent? Will be equal to 1 e to the power I 2 pi by 3.
अगर हम z क्यूब कर दें, what will you get? So z cube will be 1 cube e to the power I 2 pi, right? And what is e to the power I 2 pi? So you know that e to the power ix is equal to cos x plus I sin x. ये आइडेंटिटी तो पता है ना? तो x की जगह 2 pi अगर हम पुट करें तो cos of 2 pi will become 1, sin of x 2 pi will become 0. So this quantity is equal to 1. Therefore z cube is nothing but equal to 1. Okay, now let us take another complex number which is somewhere over here, such that this angle is equal to 4 pi over 3 and this magnitude is 1. Let's call this Z2. So Z2 will be equal to 1 e to the power I 4 pi by 3. You have to tell me what will be the cube of Z2 equal to. So Z2 cube will be equal to 1. So can we say that Z1 and Z2 are the cube roots of 1? And we already know that 1 is also a cube root of 1. So just like we have the square roots of -1, we can also say there will be cube roots of 1. Okay. So these are three very special complex numbers and these are called the cube roots of +1. The numbers are omega is equal to, so instead of z1 this complex number is called omega. It has a special name like iota. Instead of z2 this number is called omega square. Okay. So we have named these complex numbers as omega and omega square. And instead of 1 this is also known as omega cube. Okay. Omega cube is also equal to 1. So omega is equal to e to the power I 2 pi over 3. Omega square is equal to e to the power I 4 pi over 3. And then we have omega cube is equal to 1. So 1, omega and omega square, these are also known as the cube roots of 1 in the complex plane. In the real plane there is only one cube root of 1, but in the complex plane there are three cube roots of 1. Okay. Okay, so is this concept clear? Okay. What will be the value of omega 11? Okay, so the options are, will it be equal to 1, will it be equal to omega, or will it be equal to omega square? Okay, तो जैसे I का, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने देखा I आयोटा हर 4 की साइकिल में रिपीट हो रहा था, उसी तरह ओमेगा हर 3 के साइकिल में रिपीट होगा, बिकॉज ये 3 बार घूम के वापस 1 पर आ जाता है. सो अगर ओमेगा टू द पावर 11 निकालना है, ओमेगा टू द पावर 9 तो 1 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ओमेगा स्क्वायर. Okay. Similarly, what will be the value of omega to the power 2033?
तो जब 3 से डिवाइड करेंगे कितना रिमाइंडर आ रहा है? So this will be equal to omega square. What will be the value of omega to the power negative 17? It is omega. So 1 by omega square को आप लिख सकते हो omega cube divided by omega square, because 1 is the same as omega cube, and this is equal to omega. So जब भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी, जैसे ओमेगा टू द पावर -17, you can multiply this with omega to the power of 18, because omega to the power 18 is also 1. 1 के साथ तो आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. So this becomes omega. Similarly, अगर iota to the power -17 होता तो क्या होता आंसर? So इसका मतलब आंसर क्या होता? एक सेकेंड, आयोटा टू द पावर 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते? बिकॉज आयोटा टू द पावर 18 तो -1 होता है. किसी भी चीज को आप -1 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, सिर्फ +1 से कर सकते. सो इसको आप आयोटा टू द पावर 20 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या आयोटा टू द पावर 16 से कर सकते हो. 16 से करें तो ये इक्वल हो जाता है 1 बाय आयोटा के, एंड 1 को आप लिख सकते हो आयोटा टू द पावर 4, राइट. सो ये आ जाता है आयोटा क्यूब के इक्वल. इससे भी आसान होता, आप पहले ही आयोटा टू द पावर 20 से मल्टीप्लाई कर देते, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1. So you would have got iota cube, which is also equal to negative iota. So ये सब आपको बस प्ले अराउंड करना है चीजों से, and you will get the correct answer. So एक बार इनको दोबारा से देख लेना. Let us move further. Let us do properties of complex numbers. So पहली प्रॉपर्टी तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स is the product of modulus of individual complex numbers. Similarly, the modulus of z1 by z2 is equal to the modulus of z1 divided by modulus of z2. So लेफ्ट हैंड साइड में हम पहले मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, उसके बाद मॉड्यूलस निकाल रहे हैं. राइट हैंड साइड में हम पहले मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं. The property says both of them will be the same complex number. Okay. Then the amplitude or the modulus of z1 times z2, this is equal to the amplitude of z1 times the amplitude of z2. This is because amplitude में सिर्फ r वाला पार्ट आता है, and similarly the argument of z1 times z2 is equal to argument of z1 plus argument of z2. एंड इसमें हम +2n पाई ऐड कर सकते हैं.
या नहीं? कर सकते हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में अगर आप 2 पाई के मल्टीपल्स ऐड करोगे तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा. दैट विल नॉट चेंज योर कॉम्प्लेक्स नंबर. Similarly, the amplitude of Z1 by Z2 will be the amplitude of Z1 divided by amplitude of Z2, and argument में we will subtract. Let's say we have a complex number Z to the power n. Can we say the amplitude of this complex number will be the amplitude of Z whole raised to the power n? Can we say this? एंड प्रूफ करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी n टाइम्स लगा दोगे. What will argument of z to the power n be equal to? This will be equal to n times the argument of z. Okay. Yes. So the next topic is the de Moivre's theorem. इसका नाम जरूरी नहीं है, बट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. It says that cos of n theta plus I sin of n theta, this is equal to cos theta plus I sin theta to the power n. इसको प्रूफ कैसे करेंगे? Okay, so इसको प्रूफ करने के लिए you will use the property that cos theta plus I sin theta is equal to e to the power I theta, right? एंड इसको अगर हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा e to the power I n theta. And if you again open this up, this will be cos of n theta plus I sin of n theta, which is the same as the left hand side. So ये जो डी मोइवर्स थ्योरम है, जब ये थ्योरम लिखा गया था, देन ही प्रूव्ड इट यूजिंग सम अदर मेथड, और वो जो प्रूफ था वो 2-3 पेज का प्रूफ था. बट यूजिंग दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एनालॉजी यू कैन प्रूव दिस डी मोइवर्स थ्योरम इन जस्ट 1 लाइन. So that is how useful this e to the power I theta notation is, because आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आप एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट कर रहे हो, एंड देन यू कैन यूज द प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपोनेंट्स. सिमिलरली अगर प्लस की जगह नेगेटिव होता, यहाँ पर अगर नेगेटिव होता तो भी प्रूव हो जाएगा. ये भी आप प्रूफ कर सकते हो. हाँ, तो इसको लिखेंगे e टू द पावर माइनस आई थीटा, n से मल्टीप्लाई करेंगे तो e टू द पावर माइनस आई एन थीटा, विच इज इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. तो एक ही लाइन का प्रूफ है. दिस इज नोन एज द डी मोइवर्स थ्योरम. तो अब हम नेक्स्ट
नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं कहेंगे, पहले ही हम इसे कर चुके हैं, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो हमने अभी देखा था देयर वर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, व्हाट वर दे? So there are 3 cube roots, 1, omega and omega square. Can you prove that omega is equal to -1 plus I root 3 by 2 and omega square is -1 minus I root 3 by 2? इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन पे ड्रॉ करो तो आपको समझ आ जाएगा अपने आप। When we draw it on a complex plane, the first cube root is just 1. The second cube root is omega, which is at an angle of 2 pi by 3 from the x-axis. And then omega square is at an angle 4 pi by 3 from the x-axis. So if you use trigonometry, you can prove that this line segment will be equal to -1 by 2 and this length will be equal to positive root 3 by 2. So this omega will be equal to -1 by 2 plus iota positive root 3 by 2. And similarly, omega square will have both the quantities negative. So this will be -1 by 2 negative iota root 3 by 2. Okay. Suppose we have to calculate the nth root of unity. In the previous problem, we had calculated the third root. Suppose we need to calculate the nth root of unity. Then how will you draw it on the complex plane? So you have +1. Now you will draw a circle like this. And then you will divide your circle into n different parts. So let's say this is the circle with radius 1. The first root is just 1. Then you will divide your circle into n different sectors. Each will have an angle of 2 pi by n. So when you do this, what you will get will be the nth root of unity. If you want to find the third root, divide the circle into 3 parts. Then you will again get omega and omega square. If you want to find the fourth root, then you will divide it into 90-degree parts. So you will get iota, -1 and negative iota. If you want to find the 10th root, divide it into 10 sectors with a gap of 36 degrees each. And these will be the nth roots of unity. So first root will be cos of 2 pi by n plus iota sine of 2 pi by n. Right. And the kth root will be cos of 2 pi k by n plus iota sine 2 pi k by n. And then all the roots will repeat after a cycle of n.
Okay, so we represent these roots by the numbering 1 alpha, alpha square, and dot 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 alpha n minus 1. Okay, so these are the nth roots of unity. So if n is equal to 3, then we have 1 omega omega square. If n is equal to 4, we have 1 iota, negative 1, and negative iota. And for a general n, we have these values. Okay. Okay, we also had to cover quadratic equations today. So quadratic equations don't have anything to be taught. They are pretty straightforward. Okay. So if we have an equation, if we have a polynomial with the highest power as 2, then it's called a quadratic equation. Uh, you already know that it has two roots, alpha and beta, and the sum of its roots is equal to negative b over a. The product of its roots is equal to c over a. Okay. This you already Yes. know. And then we also know the formula for the roots. So the formula is negative b plus minus square root of b square minus 4ac by 2a, where b square minus 4ac is called the determinant of the quadratic. If the determinant is positive, then it will have real roots. If the determinant is negative, then it will have imaginary roots, both of which are complex conjugate.